पानी के अंदर आओगे इतना ज़्यादा कंफर्ट फील होगा। शुरू शुरू में तो मुझे थोड़ा ज़्यादा गर्म लग रहा है और ऊपर के हिस्से में ठंड भी लग रही है। तो कैसा है, गर्म है? तो ये वाला शायद गर्म नहीं है, सही। हम बिल्कुल होल स्क्रीन खिड़कियाँ North American and this is Eurasian plates. Column formation of the rocks, and this is famous for that. And that side of the rock is now visible a little bit, you can see. और ये हो गई एक नई सुबह और देखो क्या सीन है हमारे रूम से। मतलब इतना साफ वेदर आइसलैंड में भी पहली बार मिल रहा है, पता नहीं कितना टाइम नसीब होगा। आज हम लोग जाएंगे जोकुसलरोन बोट ट्रिप करने, जो कि ग्लेशियर के करीब लेके जाएगा हम लोगों को। एंड वी विल स्टार्ट इन एन आवर। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7:30 इन द मॉर्निंग एंड विल बी स्टार्टिंग अराउंड 8:15। तो चलते हैं। हो गई है नई दिन की शुरुआत। तो आज तो काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है बिकॉज वी आर गोइंग फॉर द बोट राइड इन द ग्लेशियर। तो दिस इज़ जोकुसलरोन ग्लेशियर। तो हम लोग जा रहे हैं अभी। ये खड़ी है हमारी गाड़ी, तो चलते हैं। अभी बज रहे हैं 8:05। हमारा बोट ट्रिप है 9:30 को। तो यहाँ से 1 घंटा 22 मिनट्स दिखा रहा है, तो मतलब बहुत क्लोज कॉल हो गया। थोड़ा लेट से उठ पाए आज बिकॉज यस्टरडे वी केम लेट। एंड उसके बाद यहाँ पे ये काइंड ऑफ एक हॉस्टल जैसा है। हॉस्टल मतलब इंडिया जैसा हॉस्टल नहीं, यहाँ पे हॉस्टल जो होता है मतलब आपको प्राइवेट रूम मिलेगा, वॉशरूम और किचन शेयर्ड होगा। एक बड़ा सा किचन था, एक बड़ा सा डाइनिंग हॉल था। तो वहाँ पे हम लोग बात करने लगे तो लेट हो गया थोड़ा सोने में। तो आज इसलिए उठे थोड़ा लेट से। लेट मतलब 7 बजे उठे, उतना भी लेट नहीं। अभी चलते हैं, जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। ये हमारे होटल से निकलते ही है, ये रास्ता थोड़ा ग्रेवल रोड है और यहाँ पे चारों ओर माउंटेन्स है। अभी आज थोड़ा मौसम अच्छा है इसलिए दिख रहा है इतना, तो कल तक तो कुछ भी पता ही नहीं चल रहा था क्या है।
हम कर दिए गाड़ी अपना पार्क यहाँ पे और फिर हम चलेंगे। थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा, जहाँ से उठ के मैं फिर आपको दिखा पाऊँगी ग्लेशियर। और उसके बाद हम लोग तो बोट ट्रिप भी लेने वाले हैं। दैट इज सो वी आर नाउ सिटिंग इन द कैफेटेरिया एरिया because they said like they will provide us the jackets and winter gears for going to the boat trip. So हमारा जैकेट रख दिए हैं, we are waiting for their jackets and this is the first day trip, like sorry first boat trip of the day. तो अभी वो लोग पे नहीं कर रहे हैं, खुले नहीं पूरी तरह से, so we are waiting. ये कैफेटेरिया दिखा देते हैं आपको। Need like waterproof pants, but if in case you need it, we can provide. So just let me know. But we will give you a jacket. This one is military because it does help you to float in case you fell in the water. But please stay in the boat. Okay. And then we will give you a life vest. Weather, take off your jacket. Just take this one. So just put your jacket in a bench. But if you feel like you will be cold or you want one more layer, just let me know. I will give you extra size. Okay. Yeah. You can just put in a bench, one of the bench there. तो हम लोग पूरा गियर अप हो चुके हैं एंड ड्रेस्ड अप भी हो चुके हैं फॉर बोट ट्रिप। चलो चलते हैं। Shortly introduce your wearing on. So the jackets, they're flotation jackets. In case you end up in water, they will help you to float. The life vest is automatic, so in contact with water, it will pump automatically. In case it fails, you have the red string. Please locate it, but not necessarily pull it now. And yeah, we will do our best to not put any of this in use. And I will invite you to short walk to the shore. So we are going towards the boat and this is the way, like it's a like short trail, kind of 10 minutes walk to reach out to the boat. So our group has like 8 to 10 people, I think. What a scene! দারুণ, অসাধারণ। ভাষায় প্রকাশ করা যাচ্ছে না। Sorry guys, I had to tell Bengali. I mean, what I said is awesome. I'm awestruck. Serene beauty. Now, the question is, have I ever seen anything beautiful than this? And the answer is definitely no. This is something beyond words. And this is first time I'm experiencing, and I know like this can be experienced in Iceland only. This is something which really I am lacking of words. I cannot express in words. So beautiful, so magical. You can see at my back. Oh, it's so beautiful. Wow. So now we are going to the boat. मतलब यहाँ से इतना सुंदर लग रहा है, बोट से तो देखने कितना सुंदर लगेगा। Thankful to God, today the weather is very good and is very warm and it's very clear also compared to Iceland. You can see my back, it is very clear today. Hopefully we'll see.
sitting while we are moving. If you would like to stand up to take some picture, we can do that later. But you need to ask me first, and we do that only one person at the time. I speak only Italian. Okay. Then you have white ice, obviously, and this we can explain based on snow. So if you have a bunch of snow, in fact it's full of snowflakes and air. And because of that the light is blended, and all the color spectrum it's transmitted towards you, so you can see it as white. And then you have glacier ice, which is nice and blue, and that's caused because the glacier ice is really compressed and there is almost no air inside. And because of that, most of the light spectrum goes through, but the blue color is reflected, so we can see it as a blue color. तो हम लोग जो आइसबर्ग देख रहे हैं उसको सिर्फ 10% ही ऊपर है, 90% पानी के नीचे है। एंड पानी लाइक 60 मीटर डीप। यही बोले कि मतलब अगर कुछ गिर फिर जाए तो उसका माया छोड़ देना, एक नया ले लेना। So now we are going back to the place where we started. So magical, so beautiful. Nothing can be more beautiful than this. That's what I feel right now. And I love God. And God is supported. Today you see the sunshine also and blue sky. That's beyond expectation. And तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म, और नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखेगा डायमंड बीच, जो मेरे लिए सबसे फेवरेट जगह है मेरा आइसलैंड में। मतलब आई एम कंफ्यूज कि बोट राइड सबसे फेवरेट था या डायमंड बीच, तो दोनों ही इक्वली गुड है। तो आप जरूर वो वीडियो देखना, वो मिस मत करना। और आपने अगर मेरा पिछला कोई वीडियो मिस कर गए हो तो आप जाके आइसलैंड सीरीज का प्लेलिस्ट जो मैंने बना के रखा है वहां से आप सारे वीडियोस देख सकते हो, और देख के मुझे बताना कैसा लगा आपको, क्योंकि आपके फीडबैक बहुत ही ज़रूरी है मेरे लिए। तो मैं आगे मेरे वीडियोस में उस टाइप का सुधार लाने की कोशिश करूँगी। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज भी कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है मोहलिमा मुखर्जी, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। तो टिल देन, जियो, खुश रहो और live every moment of your life. Till then, bye bye.